everyone, hope you are doing well. This is another tarot reading for you, and as the title suggests, this reading is about the second half of your life. आपका जो second half है life का वो कैसा रहेगा, क्या आपके career में changes है या फिर in your second half of your life you get married, and how is the married life. Basically जब भी हम second half of life की बात करते हैं in astrology, in Vedic astrology, we usually see the Navamsha chart, the 9th division. It's really a very important chart in Vedic astrology which describes your second half of your life or your married life as well. And एक ऐसा चार्ट है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ होता है, हर एस्पेक्ट में यूज़ होता है आपकी लाइफ का, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो. नवामशा बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर जो है इट्स लाइक ए नवामशा रीडिंग बट थ्रू टेरो. So Navamsha represents the second half of our life. So the life after the age of 35, तब उसके बाद जो है नवामशा फुल फोर्स में जो है काम करता है. मोर देन D1 मेन बर्थ होरोस्कोप नवामशा काम करता है. So even if you get married when you are 25 or you are 26, you get married, then also जो नवामशा है वो अपना फुल इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है. बट इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर 35 years old and above 35, then also Navamsha is very kind of influencing your life now. The Navamsha has the bigger say in your life more than the main birth horoscope. तो यहाँ पर जो है नवामशा रीडिंग है बट थ्रू टेरो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. जो पाइल नंबर 1 है वो आपकी सात्विक साइंस की होगी. ये जो रीडिंग है आपने अपने मून साइन से देखनी है. And if your moon is placed in the sattvic signs like Cancer, Leo, Sagittarius या फिर Pisces, then you have to choose pile number 1. और pile number 1 का ये वाला कार्ड है, ये वाला I should say deck है. आप डेक से भी चूज़ कर सकते हो. इफ़ यू डू नॉट नो योर मून साइन देन यू कैन चूज़ फ्रॉम डेक एज वेल. तो ये पाइल नंबर 1 का डेक है जो सात्विक साइंस का है. देन वी ऑल्सो हैव द पाइल नंबर 2. तो जो पाइल नंबर 2 है वो आपके रजासिक साइंस की होने वाली है, यानी कि मून इन द साइंस लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लीब्रा. सो आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करनी है अगर आपका मून इनमें से किसी एक साइन में प्रेजेंट है. एंड इफ़ यू डू नॉट नो आपका मून किस साइन में, देन यू कैन अगेन चूज़ फ्रॉम द डेक. ये पाइल नंबर 2 का डेक है. ऑलराइट. सो पाइल नंबर 3 इज़ योर थमासिक साइंस वाली पाइल. इफ़ योर मून इज प्लेस्ड इन द साइंस लाइक वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 3. और ये पाइल नंबर 3 का डेक है. If you do not know your moon sign, then you can of course choose from the decks here. So मैं इसकी जो है इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी लगा दूँगी और जल्दी से हम ये रीडिंग शुरू करते हैं. मिलती हूँ मैं आपके रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने चूज़ करा है ये वाला डेक एंड योर मून इज़ प्लेस्ड इन द साइंस लाइक कैंसर, लियो, Sagittarius या Pisces. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई दीज साइंस आर सात्विक, बिकॉज जो कैंसर है वो मून रूल करता है, लियो जो है सन रूल करता है, और जो आपका Sagittarius एंड Pisces साइन है जुपिटर रूल करता है. सो दीज साइंस आर सात्विक बिकॉज प्लैनेट्स आर सात्विक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंसर साइन इट्स अ मोक्षा हाउस, 9th हाउस और द साइन ऑफ Sagittarius, प्लस Pisces is also a moksha house. So moksha house are always the houses or the signs which gives you nourishment and makes you feel at home, makes you feel comfortable, और एक तरह से आपको isolate भी कर देता है बाहर की problems से. That's why these houses are called moksha houses. Even your sleep is represented by Pisces. आपकी sleep कैसी है, that is also seen from the 12th house or Pisces sign. At the same time, the Leo sign or the 5th house is अगेन जो 5th हाउस है या जो लियो साइन है वो आपके जो पूर्वा पुण्य भवा है उसको रिप्रेजेंट करता है. पूर्वा मीन्स पहले, जो आपकी पिछली लाइफ थी. पूर्वा पुण्य मीन्स गुड डीड्स एंड भवा मीन्स हाउस. सो जो आपके गुड कार्मास का हाउस है कि आपने कितने अच्छे कार्मा करे हैं इन द प्रीवियस लाइफ टाइम्स, वो हम 5th हाउस से देखते हैं. 5th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स. सो दैट्स वाई इट इज़ अगेन काउंटेड एज सात्विक साइन, लियो साइन. एट द सेम टाइम मून जो है हमारी लिक्विड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में.
tides control करता है on earth. Moon also represents our mother and emotions, so without mother we cannot be here. और father जो है sun represent करता है, authority sun represent करता है, तो without father also we cannot be here. हम यहाँ होते ही नहीं. और sun also is the ultimate source of energy, gives us light and it gives us energy. और जो plant है photosynthesis भी sun की वजह से ही करते हैं, तो plants also are important. तो एक तरह से life जो originate sun से हो रही है, तो sun is a sattvic planet. Then if we talk about Jupiter, Jupiter is also sattvic planet because it's Brahaspati, the guru, the deva who always blesses. At the same time Jupiter is blessing in a sense के जहाँ पर Jupiter gives us knowledge, gives us wisdom कि क्या सही है और क्या गलत है, और एक तरह से हमें गुड कार्मा करने के लिए जुपिटर कहता है और बताता है कि अगर ऐसा करोगे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड. सो नॉलेज जितनी भी, इवन PhDs, मास्टर्स, is all seen from the 9th house or the 9th sign Sagittarius, and Jupiter is the karka of wisdom. तो कौन कितना wise है? See, intelligence is seen from Mercury, wisdom is seen from Jupiter. So that's there. Plus Jupiter also protect our Earth from meteoroids. So without Jupiter, our Earth would have been already destroyed. So it's a sattvic planet again. And if your moon is present in, let's say, Cancer, then you must have you can have Pushya Nakshatra, and Pushya is a nakshatra ruled by Indra, and Indra had a cow. So if your moon is present in Pushya, definitely you are a person who loves milk product. Plus your mother also loves milk product, especially paneer is your favorite dish and your mother's favorite dish. Buttermilk, ghee, these kind of things are really your thing. And definitely जब कोई अगर दूसरा person आपको देखता है तो वो ज़रूर जानता है that you guys eat a lot of butter and ghee, especially you and your mother, क्योंकि जो body है वो काफ़ी ज़्यादा plump है और काफ़ी खाते पीते घर के लगते हैं. So that's Pushya Nakshatra. At the same time, Pushya can also be really very patriotic. You can be a patriotic person, but more so it's about the food. And even if you are ill, then also आपके रेस्टोरेंट में reservation है, you are not gonna cancel that reservation. You are gonna be like, okay, let me take medicine and we are going out to eat. Food becomes really important for Pushya people. You can be a foodie as well. So that's there. If your moon is present in, let's say, Leo sign, then in Leo we have the nakshatras like Purva Falguni, Uttara Falguni, and of course Magha Nakshatra. So first of all, sleep becomes really important. Without sleep there is no life. Plus you will also have a morning routine. Without morning routine you cannot just work. You will feel jittery all day if you didn't follow that morning routine. चाहे वो morning routine घर का एक चक्कर काटना हो या फिर lukewarm water पीना हो, at least 2 glasses of lukewarm water, that's your morning routine. अगर आपने वो नहीं लिया then you are gonna feel jittery all day. So that is there. At the same time, because of Magha Nakshatra, you can be a person if your moon is placed in Magha. ये जो मैंने अभी बताया रूटीन वाला, मॉर्निंग रूटीन और स्लीप बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ये उत्तरा एंड पूर्व फाल्गुनी के लिए. व्हेन इट कम्स टू माघा, इफ योर मून इज प्लेस इन माघा, देन यू आर ए पर्सन हु रियली लाइक्स टू follow the tradition, follow the customs of the family and want to have a big family, want to have a lineage. That's there. And if your moon is present, let's say, in the sign of Sagittarius, then if you have Moola Nakshatra, Moola is about the root. So you and your mother can be the people who love to eat things which are grown inside the earth, like potato, ginger, garlic. You may take extra ginger, extra garlic in your food. That can happen with Moola Nakshatra. You always want to go deep into something, always want to go into the depth of something to know. For example, there is a child who always opens up the toys to see that why this toy is working and will look into it that why this toy is working, and then they found out, all right, it has a cell, let me taste it. So it's about चीज़ों को डेप्थ में जानना कि ये वर्क क्यों कर रहा है, ऐसा है क्यों. ऑलवेज जो एक वाई क्वेश्चन है उनके मन में ज़रूर आता है, मूला लोगों के मन में. सो यू कैन बी अ मूला पर्सन इफ़ योर मून इज़ प्लेस्ड इन सेजिटेरियस, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट इट कैन बी इन मूला नक्षत्र. देन इफ़ योर मून इज़ प्लेस्ड इन द Pisces sign, first of all it's a confused moon. It's like any planet coming in the Pisces sign is confused because the symbolism of Pisces is of two fishes. One fish is going in one direction, the other is going some other direction. So
It's always a confusion. But let's say your moon is placed in Uttarabhadrapada nakshatra. Uttarabhadrapada is a nakshatra about your Ahirbudhyana, and Ahirbudhyana is said to be the serpent living inside the ocean. So the ocean, he lives inside the ocean of devotion. So you can be a person जो in future या अभी से ही उनके मन में ये हो कि what is spirituality, what is religion, why should I believe in God, always want to know the depth of spirituality. And you will also know the depth of spirituality, especially if your moon or your Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart is present in the nakshatra of Uttarabhadrapada. You receive HD signals. You receive HD signals where most of the people may not really, catch. They just are not able to catch those signals, whereas you catch that HD or 4K signal where you get to know spirituality, where you get to know the higher dimensions. So Uttarabhadrapada is a very, very eccentric nakshatra. It is, of course, it's a Lakshmi nakshatra, so definitely here it gives you a lot of wealth, especially after marriage. It will give you a lot of wealth. But yes, this nakshatra is going to make you quite spiritual and quite unorthodox, weird, I would say, because कुछ लोग जो एक रियल स्पिरिचुअलिटी है वो सच में थोड़ी वियर्ड है. इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. पीपल मे नॉट रियली अंडरस्टैंड यू. यू कैन बी मिसअंडरस्टूड इन द सोसाइटी, इन योर फैमिली बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स. बट डेफिनेटली यू आर ए पर्सन हु विल गेट इन टू द डेप्थ ऑफ दैट स्पिरिचुअल progress, or you will get into depth of spirituality and are going to come out in the society and going to breathe, meaning you are going to come out and give the knowledge to other people. You are going to spread the knowledge, but you cannot really live inside the ocean, deep ocean of spirituality, because you always have to come out to breathe. Basically, you have to come out in the society and have to serve. So the thing with the Uttarabhadra is that you become very spiritual, but at the same time you really express yourself materialistically. It's a very chaotic nakshatra, plus it's a very difficult nakshatra to understand. Of course, we have to see other aspect on this Uttarabhadrapada or any other planets or in Navamsha, how this Uttarabhadrapada is behaving. That's really important, because this nakshatra gives you certain experiences in life which are quite scary. But don't worry, don't worry. It's a nakshatra which is about spirituality. In your past life, whenever this nakshatra is active, we say that yes, in your past life you must be deep into spirituality, and you died, and after, in this birth you again have to follow that spiritual path. So that's there. जो आपने जहाँ छोड़ी थी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वहीं से ही आप फिर से शुरू कर रहे हो. दैट्स वाई यू रिसीव HD सिग्नल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द हायर बींग्स. तो ये चीज़ है. बट डेफिनेटली यू ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेल्फ मटीरियलिस्टिकली. सो यू बिकम क्वाइट वियर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बिकॉज आप स्पिरिचुअल भी हो, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू हैव Gucci and Armani and Prada, so these kind of brand. You want to express yourself in brands as well. You want to express yourself in the society by owning luxurious items. So that's there. So let me just get started. कि जो आपका second half of your life है वो कैसा रहता है. So let's see. जो पाइल नंबर 1 है, जिनका भी मून सात्विक साइंस में है, उनका जो second half of life है, how is the second half of pile number 1, second half, यानी after the age of 35 और after marriage only, क्या जो लाइफ में चेंजेस है आते हैं, या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ. सो वी हैव 6 ऑफ कप्स. वी ऑल्सो हैव द वाइस काउंसलर. ऑल राइट, वी हैव द ड्रीमर कार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर मैरिज जो है नवामशा एक्टिवेट होता है, या फिर 35 की एज के बाद ये नवामशा एक्टिवेट होता है. इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन 35 के बाद ये चीज़ जो है एक्टिवेट होती है. इफ़ यू गॉट मैरिड अर्ली देन उसी टाइम पीरियड पर, चाहे आप 22 ईयर्स के हो, स्टिल इफ़ यू गॉट मैरिड देन नवामशा इज़ गोना गेट एक्टिवेटेड. तो उस टाइम पे ये रीडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगी. एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड यू आर 35 देन ऑल्सो ये जो 35 के बाद ये चार्ट जो है आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा.
सो यहाँ पर जो है वाइस काउंसलर, ड्रीमर कार्ड आया हुआ है, एंड वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ कप्स हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ड्रीमर कार्ड है डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो अपनी सेकेंड हाफ जो है आपकी सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ एज वेल एज लाइफ आफ्टर मैरिज, यू आर गोना ट्रैवल अलॉट. You are gonna travel a lot and you are gonna be happy while traveling. और कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल भी improve करते हो while traveling. Somehow maybe you become a person जो navigation में बहुत अच्छे हो जाए. Maybe you become a person जिसको नाम जगहों के काफ़ी अच्छे से याद रहे. Somehow your skills are improved after traveling and while traveling and you love to travel. That's there. Wise counselor यहाँ पर आया. So after marriage or after the second half of your life is a kind of you can say you become that wise person, you become very organized, structured, you become a person who loves to be in a disciplined routine, who wants to follow disciplined routine. और वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, because you will know कि अगर मैं वक्त पर उठता हूँ तो जो मेरे मी वर्क है, मी टाइम है या मी वर्क है, जैसे कि उठना, एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद अपने फिज़िकल बॉडी को तैयार करना, और फिर ब्रेकफास्ट करना और फिर काम पे लग जाना. तो जैसे आपके मी वर्क ख़त्म होता है, यू आर मोर प्रोडक्टिव. सो अगर आपने 5 बजे उठे आप, तो 6, 7, 8 बजे तक तो रेडी हो ही जाओगे एक्सरसाइज वगैरह करके और तैयार होके. तो आफ्टर दैट यू आर रेडी टू वर्क, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू योर वर्क. तो एक तरह से ये चीज़ आपको समझ आती है. और समहाउ यू ऑल्सो बिकम अ पर्सन हु गिव्स लेक्चर्स अबाउट डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर अर्ली इन लाइफ. अभी आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो इन चीज़ों को शायद अभी अपने अंदर डेवलप कर रहे हो या चाहते हो कि आप डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो जाओ, बट समहाउ बिकॉज यू आर यंग यू आर जस्ट नॉट एबल टू डू सो. बट इन सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ और लाइफ आफ्टर मैरिज यू आर गोना बिकम a person who are really organized, structured, and you enjoy that organization and structure and that routine in your life. So that's there. At the same time you also become a person because Leo sign mein we have Magha nakshatra, you become a person who is traditional as well, who wants to follow the customs and traditions of the family. तो ये चीज़ भी यहाँ पर है because wise counselor is like Saturn. It's like Saturn who believes in tradition, who believe in orthodoxy as well. Religion में believe करना, modern spirituality, religion में believe करना, and religion and spirituality are different. They are different things. If I started to talk about religion and spirituality, I think काफ़ी टाइम लग जाएगा इसी रीडिंग में. So I should just stop. यहाँ पर 6 of cups भी है. 6 of cups here is representing, ऐसा हो सकता है you get into love marriage, and even if you know that in your family love marriage इतनी नहीं होती, still you marry somebody who you really like. Maybe this person was with you in college, maybe this can be a childhood or you can say high school romance, and you got married to this person. Somehow एक friendship नज़र आ रही है, and because ये हम second half of your life में देख रहे हैं and life after marriage में देख रहे हैं, तो somehow it can be a love marriage for you as well. But यहाँ पर जो है काफ़ी, जहाँ पर आपको हंसना है, बोलना है, आप वो करें, और जहाँ पर आपको strictly कोई चीज़ follow करनी है, एक discipline में रहना, आप वो चीज़ करें. So जहाँ एक तरह से एक what do you call बेपरवाहपन जहाँ पर दिखाना है, वहाँ पर आप वैसा बिहेव करो. जहाँ पर आपने स्ट्रिक्ट होके रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो वहाँ डिसिप्लिन में हो. इट्स लाइक अ बैलेंस. सो समहाउ इट कैन हैपन दैट यू मे हैव Capricorn ascendant in the Navamsha, Capricorn rising in the Navamsha. You become a person who is a go-getter, and you get a spouse who is quite sensual, because आपके जो 7th house में, then you will have Cancer sign in the 7th house of your Navamsha. So you can have a spouse, you may get a spouse who is quite emotionally connected to you. At the same time, because Cancer is ruled by Moon, तो of course emotionally आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को nourished feel करोगे when you are with your spouse. Your spouse is really very nourishing, but at the same time Moon, Chandra was also very sensual. So he had 27 wives, and one of his wife was very favorite. He really favored Rohini Nakshatra, and it can happen that he loves, your spouse loves luxury and want to invest in luxurious items, and your spouse is really very sensual. But yes, it's more of an indication of love marriage here. At the same time, यहाँ पर जो है you travel a lot with your spouse, or you just like to travel itself. You want to know new things, and you may even learn new languages. That can also happen. Let me just pull some more cards for you. One for your married life, one for your career. So
here this is for your marriage, 7 of wands, and other is your career related. We have the world card. ऐसा हो सकता है somehow in your career you have to travel a lot, और you somehow deal with foreign people. You can work in an MNC जिसकी वजह से आपको foreign के लोगों से मिलना पड़ता हो, foreign के लोगों के लिए काम करना पड़ता हो, and somehow after marriage you may even get promotion. एक new phase आपकी life में शुरू हो, not just in the personal life but also in the professional life. तो यहाँ पर कोई change भी नज़र आ रहा है आपके career से related. Somehow you know change your job, आपने पुरानी जॉब छोड़ के एक नई कंपनी में अप्लाई करा, दैट कैन ऑल्सो हैपन हियर. और somehow wealth is also coming here, especially Uttar Bhadrapada is a nakshatra of Lakshmi, as I've told you, so it can give you a lot of wealth after marriage. And we also have 7 of wands where it is representing your married life. तो ऐसा हो सकता है मैरिज में ऐसा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एंड somehow you have to really look forward जहाँ पर you know that मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ना होने देना, उसके लिए जो है आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ईजीली हो सकती है. समहाउ यू कैन बी अ पर्सन हु इज़ रियली बिजी इन लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड, योर करियर, यू आर वेरी बिजी, एंड योर स्पाउस कैन से दैट यू आर सो बिजी इन योर वर्क ओनली, यू आर सो बिजी विद योर acquaintances, you don't give me time. ये इस तरह की कंप्लेंट हो सकती है आपकी स्पाउस की. सो दैट कैन हैपन. सो स्पेंड योर टाइम वाइजली and you become a very organized person. So do organize, do give time to the family as well. Otherwise एक भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ का इधर उधर थोड़ा अप एंड डाउन गया नहीं कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपको करियर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है. सो मेक श्योर यू आर गिविंग टाइम टू योर स्पाउस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. बट करियर वाइज जो है इन योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ यू आर गोना फ्लरिश. इट कैन हैपन राइट नाउ. आप सफ़र कर रहे हो थोड़ा, या आपकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलें चल रही है, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ यू आर वेरी स्टेबल फाइनेंशियली, और करियर वाइज आपको हैप्पीनेस मिलती है, एंड समहाउ योर स्पाउस ऑल्सो फेवर्स यू. सो मेक श्योर you are spending time with them. That's really important. Let me just pull a guidance card for you. अभी प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए भी हम गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालेंगे. प्रेजेंट के लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए. ऑल राइट, वी हैव नर्चरिंग. ऑल राइट, प्रेजेंट के लिए ये चीज़ आ रही है कि आप जो हो, पहली बात थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना कम करो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, और जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ के बारे में सोचो, जो चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है उसके बारे में सोचो. समहाउ इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ यू रियली थिंक कि यू नो व्हाट, इन माई 20s और इन माई टीन एज काश मैंने थोड़ा सा ना अपने ऊपर जो है थोड़ा अपने आप को खुला छोड़ा होता, काश मैंने थोड़ा अपने आप को बांध के ना रखा होता, और मैं थोड़ी बेपरवाह होती, मैंने टेंशन ना ली होती, तो मैं अपना जो पास्ट है वो भी इंजॉय कर पाती, अपनी टीन एज, अपनी अर्ली 20s भी इंजॉय कर पाती. यू मे थिंक दिस वे इन फ्यूचर. दैट्स वाई इन फ्यूचर यू ट्रैवल अ लॉट, यू मेक योर सेल्फ हैप्पी बाय बाइंग समथिंग और बाय स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, और एक तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया. जब अपने काम आपने सारे सुबह सुबह ही कर लिए तो दूसरों को आप अच्छे से टाइम दे सकोगे, क्योंकि इन द मॉर्निंग यू डिड योर ओन वर्क, देन आपने अपना प्रोफेशनल वर्क जो है 12-1 बजे तक दोपहर के निपटा लिया, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हो. सो टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर डेफिनेटली गोना थिंक अबाउट कि काश मैंने टाइम को और अच्छे से मैनेज करा होता. बट येस, इन फ्यूचर यू बिकम अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. बट डेफिनेटली आपको थोड़ा खुश रहने की, थोड़ा अपने आप को खुला छोड़ने की ज़रूरत है. अपना ऑर्गेनाइज करो रूटीन, और उसके बाद जो आप देखोगे अपनी लाइफ में ग्रोथ, जो पर्सनल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होगी. And spend time with your mother as well. That's really important because mother gives you nourishment. Mother is the significator of nourishment. Moon signifies nourishment. So moon, mother, yeah. तो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? फ्यूचर के लिए पाइल नंबर 1 के. ऑल राइट, वी हैव समर सोल्स्टिस. यहाँ पर रेडियंस का कार्ड आया है, समर सोल्स्टिस का कार्ड आया है. सो डेफिनेटली इन फ्यूचर योर फ्यूचर इज़ क्वाइट ब्राइट. डू नॉट वरी, फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है. इट इज़ ऑल अबाउट वेकिंग अप अर्ली, गोइंग टू बेड अर्ली. सो एक तरह से अपना रूटीन जो है वो रखना ज़रूरी है. यहाँ पर यही गाइडेंस है, बिकॉज रूटीन जब आपका सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. दैट्स इट. That's pretty much it for you, pile number 1. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile.
you chose this pile and your moon is present in the Rajasic signs, यानी कि आपका मून एरीज, टॉरस, जेमिनाई या फिर लीब्रा साइन में. Why these signs are Rajasic? Because Aries represents our physical body. It represents our willpower. It represents the head as well. So कोई भी माइग्रेन या हेडेक होता है या कंटिन्यूस आपको होता रहता है तो we of course see the sign of Aries कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है और वो कहीं हेम्ड तो नहीं है बाय मलेफिक्स या फिर पाप कर्त्री योगा में तो नहीं है. पाप कर्त्री मीन्स a good house or a good sign or benefic sign is getting hemmed by malefic planets. So that's Pap Kartri. Shubh Kartri Yoga is also like you can say opposite of Pap Kartri, because Shubh Kartri is when benefic planets kind of hem a very benefic house, then it's Shubh Kartri Yoga, which is great, which is amazing. बट यहाँ पर एरी साइन डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है आपकी फिजिकल बॉडी को बेसिकली. देन व्हेन इट कम्स टू योर टॉरस साइन, टॉरस रिप्रेजेंट्स योर फैमिलीज वेल्थ. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कुटुंब. इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट योर फूड, इट्स अबाउट द वे यू टॉक, द टोन ऑफ स्पीच इज सीन फ्रॉम द टॉरस साइन, एंड द थिंग्स यू वैल्यू इन योर लाइफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय टॉरस. Then the Gemini sign, Gemini is ruled by Mercury, Taurus is ruled by Venus, and Aries is ruled by Mars, Libra is again ruled by Venus. So the Gemini sign है वो represent करता है आपके short distance travel, as well as it represents your siblings, especially younger sibling. Sign of Gemini also represents your प्ले ग्रुप्स, जो आप बचपन में जो आपके प्ले ग्रुप्स थे उनको रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई साइन. एट द सेम टाइम जेमिनाई ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्किल्स ऑफ हैंड्स, इट रिप्रेजेंट्स थिएटर, इट रिप्रेजेंट्स राइटिंग, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सोशल मीडिया. देन साइन ऑफ लीब्रा रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप, लव, मैरिज, स्पाउस. इट रिप्रेजेंट्स business partnership, marriage partnership, contracts, the people you meet in your life, or what kind of people you attract in your life. That is also seen from the sign of Libra. So let's just get started. Okay, before that, moon present in Aries. If your moon is in the Aries sign, it can be in the nakshatra of Ashwini. So Ashwini में अगर moon है, you are a person who may walk fast, talk fast, eat fast. You can be a person जिनको hair style रखने का बहुत ज़्यादा शौक है. More than clothes, you are very concerned about your hair. And if your moon is present in the sign of Taurus, then sign of Taurus में we have the nakshatra of Rohini. You can be a person who love luxury, who love perfume. You want to be in rom-com. You want to have that honeymoon phase throughout life. You are a person who may really like to do eye makeup or want to enhance their eyes by using colorful eye contact lenses, maybe green eyes, blue eyes. You really like these kind of things, and enhancing the eyes becomes really important because Rohini is a Naga rule nakshatra and Nagas have hypnotic eyes, so you really focus on the eye makeup more than anything else. And even if your Jupiter is present in Rohini, Mrigasira, Ashlesha, so then also eyes जो है enhance करना, that can be seen. Even if your sun is present in these nakshatra, you really like to enhance your eyes. At the same time, Rohini is also a nakshatra about pharmaceuticals. It's about working in a medical field, because snake के पास poison होता है. Poison industry, homeopathy, and essential oil, bark flower remedies, इन चीज़ों में work करना. Then if your moon is present in, yes, one more thing about Rohini, you can be a person who really wants to express yourself materialistically. Rohini is the moon's favorite nakshatra as well. Chandra loved Rohini and he favored Rohini more than his other wives. So very much interested into media as well, designing. And when your moon is present in, let's say, the sign of Gemini, you are a person who is definitely going to travel. If your moon is present in Punarvasu nakshatra, you are definitely going to travel in your life. You are even as a child, आपको अपने for example your mother or your father got a promotion but they have to leave the city, तो आपको भी अपने parents के साथ उस city में जाना पड़ा. So you travel a lot पुनर्वासु के साथ. And your moon can be your Amatya Karka planet as well, it can be your Atma Karka, but Punarvasu definitely the person travels a lot. And if it's an Aries ascendant, if your Lagna is Aries rising, then and moon is present in the Gemini sign, moon is ruling the 4th house, so definitely you travel with the comfort of home. Maybe you travel with your pillow, maybe you travel with your favorite teddy bear,
because you really like to have that comfort of home. That is seen. So if your moon is present in the Libra sign, see, Libra is about love, relationship or contracts, whether it's business contract or marriage contract. Here moon really wants to be in relationship or wants to have a contract with somebody. So balance, peace of mind या एक जो balanced या stability जो है आपकी, वो relationship में आते हो तब आती है, या marriage situation में हो तब आप काफ़ी ज़्यादा stable feel करते हो. So for you companionship becomes really important. Teamwork becomes really important. Plus moon, let's say, is in the nakshatra of Vishakha. So here in Libra, Vishakha becomes quite confused again, because Libra is a sign of the scales, and find me one Libra who is balanced. It's next to impossible, because Libra के जो symbolism है, it's about the Libra symbolizes scales, और scales हमेशा ऊपर नीचे होते हैं, उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है. सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना या चूज़ करना कोई चीज़ बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. फॉर इफ़ यू गॉट ए चांस कि मैं क्या चूज़ करूँ, कि मेरे पास एक तो ये ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है, सो यू विल बी वेरी कन्फ्यूज अबाउट चूजिंग द राइट ऑप्शन फॉर यू. और हर चीज़ आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस पर आके अटक जाती है कि अब people can have 4 options and they have to choose one from them. For you it's always 2. दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि करूँ तो करूँ क्या, मैं कौन सा ऑप्शन मैं चूज़ करूँ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी. सो दैट कन्फ्यूजन कम्स इन टू प्ले. प्लस विशाखा नक्षत्र, आई मीन डायरेक्टली ऑपोजिट टू विशाखा नक्षत्र वी हैव कृतिका नक्षत्र. सो यू आर अ पर्सन हु मे कट पीपल इन कम्युनिकेशन. यू आर अ पर्सन who is very good in editing things, whether it's editing videos, whether it's editing pictures, and you are a person who is good in cooking as well. Cooking becomes a therapy, so that's there. So let's just get started. आपका जो ये second half of your life है वो कैसा रहता है, and यानी second half of your life is definitely seen from the Navamsha chart. The second half of your life is basically life after the age of 35, or even if you got married 20, let's say you got married at the age of 22. तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, जैसे आपने यू गॉट मैरिड, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, सडनली दैट नवामशा इज गोना कम अलाइव इन योर लाइफ. More than the main birth horoscope, Navamsha will have a bigger say. यहाँ पर either you activate your Navamsha through marriage, और अगर आप मैरिज नहीं हुई आपकी, आप 35 प्लस हो, then definitely this Navamsha is now activated. So Navamsha really get activated if you got married, or it get activated after the age of 35. So let's just get started. जो फाइल नंबर 2 हैं उनका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है वो कैसा रहता है. सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ. All right, we have the card 10 of cups here. Amazing card, very abundant card. We have 6 of cups and we have 5 of cups here. cups की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर साइंस, यानी कि कैंसर एंड योर साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जो ये साइंस है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके नवामशा चार्ट में. कोई ना कोई प्लैनेट इनमें प्लेस्ड हो सकते हैं इन साइंस में, एंड यू कैन हैव अ कैंसर राइजिंग एज वेल. आई फील ये इट्स नॉट अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, इट कैन बी कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा dominating हो सकता है, but rising sign I really feel that in your Navamsha Cancer sign is rising, and you become a person who is very much emotionally connected to the family, very much emotionally connected to the work as well. तो हर चीज़ आप अपने दिल पर ले जाते हो. You want to make connection with people. You whenever you do business, whenever you are in a work kind of situation, job kind of situation as well, still you are really connected to your work emotionally. If your work is not complete, you are not going to feel happy. So you are very much emotionally connected to your work. You want to have an emotional connection with other people. You want to nourish other people. You want to kind of become that motherly figure for other people in your second half of your life. You understand other people's psychology, or you understand other people's emotions quite well in the second half of your life. At the same time, we have 6 of cups. 6 of cups here is definitely representing a love marriage. So it can happen that you marry somebody who you really love, who you were in relationship before, or who you were in friendship before. So it's a love marriage. It can be an arranged marriage as well. It can be love come arranged marriage, but more so I feel that it's a love marriage and your parents are accepting that person in your life. So it can be love come arranged, but more so I'm getting the feeling of love marriage here. And यहाँ पर 5 of cups भी है. 5 of cups here is representing that
there is so much positivity in your life, so many positive things happening in your life, still आप कहीं ना कहीं और भी अच्छा अपने लिए चाहते हो, और चाहिए मुझे, और जो है सोशल लैडर को चढ़ना है, क्लाइंब करना है, मुझे और कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे और लोगों की हेल्प करनी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू ऑलवेज वॉन्ट मोर एंड यू आर नॉट रियली लुकिंग कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी अकम्प्लिश कर ली हैं। एंड सम हाउ यू ऑल्सो एट टाइम्स यू गेट कई बार जब आप लोगों से बात करते हो तो कुछ बातें जो है लोगों की आपको हर्ट करती है, पिंच करती है। एंड योर स्पाउस इज एक्चुअली अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, बिकॉज इफ दिस इज अ कैंसर नवामशा, तो कैंसर के डायरेक्ट ऑपोजिट 7th हाउस में वी हैव द कैप्रिकॉर्न साइन। सो यू एंड अप विद द पर्सन हु इज़ क्वाइट मेच्योर, हु इज़ गोना गिव यू एडवाइस कि इतना भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। और somehow your spouse really boost your ego as well, और कहीं ना कहीं स्पाउस काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो उनके पास सोसाइटी की जो नॉलेज है, ये कह लो मटीरियलिस्टिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है उनके पास। So this person, whoever you are going to end up marrying, that person is quite rich because this person know how to do business. At the same time, they know how to carry their image in the world, and somehow he also makes you a person जो थोड़े अगर आप, of course you are an emotional person in your second half of your life, you really want to have that emotional connection with people, but your spouse wants you to become a little practical. Your spouse wants you to be more practical in life, to be more a person जिसको दूसरों की बातों का इतना फ़र्क ना पड़े, but you definitely get affected by other people's maybe actions and their words. So your spouse always tells you that इतना भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. So spouse kind of becomes that grounding force जो आपको हमेशा ग्राउंड करके रखते हैं, जो आपको ज़मीन पर रखते हैं, अपनी रूट्स के पास रखते हैं. एंड स्पाउस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो प्रैक्टिकल है, आपको रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं, आपको रियलिस्टिक एडवाइस देते हैं. सो दैट इज़ सीन हियर. सो लेट मी जस्ट पुल ए कार्ड फॉर योर मैरिज एंड फॉर योर करियर. तो सेकेंड हाफ लाइफ का जो है पाइल नंबर 2 का, उसके लिए मैरिज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन एज वेल एज करियर. सो दिस इज़ द कार्ड फॉर मैरिज एंड दिस इज़ फॉर योर करियर. तो यहाँ 9 ऑफ कप्स आया है मैरिज के लिए. 9 ऑफ कप्स इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट अबंडेंस. आई मीन इट रिप्रेजेंट्स दैट योर स्पाउस इज़ अगेन गोना बी अ वेरी रिच पर्सन. और ऐसे आपके स्पाउस होंगे जिनकी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी. एंड बिकॉज ऑफ योर स्पाउस यू ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन द सोसाइटी. If your married life is in a place जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा chaos चल रहा है, तो you are also going to see that your reputation in the society also decreased. And somehow you get मतलब neighbors के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया, या फिर अपने एक्विंटेंसेस के साथ कोई अनबन हो गई, बिकॉज आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़रूर अफेक्ट कर रही है यहाँ पर. तो इफ़ योर पर्सनल लाइफ इज स्टेबल, देन सोसाइटी में जो आप काम कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी चीज़ें स्टेबल होगी. सो मेक श्योर आपकी मैरिज जो है वो ठीक है, आप दोनों सेम पेज पर हो. एंड डेफिनेटली आफ्टर मैरिज यू बिकम अ वेरी लकी पर्सन. फॉर्चून जो है मैरिज से आ रहा है, यू बिकम क्वाइट अ फॉर्चुनेट पर्सन. और कहीं ना कहीं ये जो लक है आप अपने स्पाउस को भी दे रहे हो, भाग्य उदय आप अपने आप को तो दे ही रहे हो बट अपने स्पाउस को भी दे रहे हो. तो दैट इज सीन हियर. किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका जो करियर होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा. दैट मीन्स दैट योर मैरिड लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी स्टेबल. बट डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड विच पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स अर्थ एनर्जी. इट रिप्रेजेंट्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न साइन. तो समहाउ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी मेल फिगर. So your spouse is kind of giving you that motivation to work more, and he is a kind of a person who grounds you. Again, that वो groundedness जो है या वो स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी जो है लाइफ में, वो आपके स्पाउस आपको ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम करियर इज़ वेरी स्टेबल. इट्स वेरी वेरी स्टेबल. लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू. प्रेजेंट के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए प्रेजेंट के लिए क्या गाइडेंस है? All right, we have the rose card here. Attract a relationship. Number 6 becomes important. 26th year becomes important. 36th year also becomes important in your life. Somehow ये जो time period है इसके अंदर if you are not married,
till your, let's say, your 32 or 34, 36th year can definitely bring you a relationship which can convert into marriage. And even the 26th year जो है आपके लिए कोई relationship लेकर आ सकता है, and you can get married at the age of 26. And the rose card is definitely representing कि आप जो हो थोड़ा अपनी कार का ध्यान रखो, अपने व्हीकल का ध्यान रखो, बिकॉज रोज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीनस. सो वीनस रिप्रेजेंट्स लग्जरी, इट रिप्रेजेंट्स व्हीकल्स. तो स्पेशली if you own a car, make sure that car has a fragrance as well as your car is clean, because as soon as you take care of your car, of your vehicle, you take care of your relationship, you attract a relationship, because you are kind of helping your Venusian energy. Venus represents love relationship. So as soon as you did something for your vehicle, आपने उसे अच्छे से साफ करके रखा, आपने उसको जो है फ्रेग्रेंस रखी उसके अंदर, और आपने उसे जचा के रखा, कोई ऐसे बिखराव नहीं है आपकी गाड़ी में, you definitely will attract some relationship. और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, लड़ाइयाँ कम होगी. So let me just pull another card for you, another guidance card for your future. तो फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है, फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है. ऑल राइट, वी हैव द इंडिगो कार्ड हेयर, इम्प्रूव योर विजन. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है सच में जो आईज़ हैं वो वीक हो जाए, तो मेक श्योर आप अपनी आईज़ की भी एक्सरसाइज करो. ऐसे एक्सरसाइज आँखों की करनी ज़रूरी है, बिकॉज आई मसल वीक हो जाते हैं. दैट्स देयर. एट द सेम टाइम दिस विजन कार्ड ही इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कि दूरदृष्टा बनो, आगे की सोचो. ऑफ कोर्स प्रेजेंट में भी जियो, बट सेविंग्स पर ध्यान दो, बिकॉज अगर आपने आज सेव करा, सो आफ्टर 5 या 10 years यू कैन हैव योर ओन होम. सो थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल. सेविंग्स करने पर यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आपने नेगेटिविटी कम करी, मतलब अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर फुल स्टॉप लगाया, तो आपकी एनर्जी बचेगी. और जब आपकी एनर्जी नेगेटिव थॉट्स पर जाएगी नहीं, मतलब नेगेटिविटी में यूज़ होगी ही नहीं, तो आपकी एनर्जी तो बची, और जो एनर्जी बची वो आप अपने काम में लगा सकते हो. और जब आप काम करोगे तो आपको जो है वेल्थ तो आएगी, पर्सनल ग्रोथ होगी इन फ्यूचर. वो वेल्थ या जो पर्सनल ग्रोथ है और जो आप विजडम पाओगे उसको आप यूज़ कर सकोगे, और आप अपनी लाइफ को जो है बेटर कर सकोगे. सो इट्स अबाउट गिविंग और अप्लाइंग फुल स्टॉप ऑन द नेगेटिव थॉट्स, और एक तरह से अपनी एनर्जी सेव करके कामों में लगाना, और इन फ्यूचर उसका रिजल्ट पाना, फ्रूट मिलना. Alright dear, so this was the reading for you. I shall see in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. Your moon is present in the Thamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. If you have chosen this pile with the deck, then here is the deck. And moon in the signs like Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius. सबसे पहले ये signs थमासिक क्यों है? Because Virgo represents competition, obstacles, hurdle. It represents litigation. It represents law. It represents job. It represents contracts. Just like 7th house, yes, 6th house also represents contract, but legal contracts. And 6th house is also of divorce. Because if we count 12 places from the 7th house represents marriage, love, relationship. तो इससे अगर हमने 12 places count करी, तो जो है साइन ऑफ वर्गो आता है, 6th हाउस आता है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ मैरिज कैन बी सीन, यानी डाइवोर्सेज आर सीन फ्रॉम द वर्गो साइन. प्लस वर्गो इज ऑल्सो डिटेल ओरिएंटेड. एंड इफ वी से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, देन साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स सडन अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ एंड डेथ, accidents, surgeries, dealing with occult, mysticism, black magic, white magic, tantra, astrology, mysticism, tarot. All these things are represented by the sign of Scorpio, plus things which are you can say जो बाहर नहीं आनी चाहिए, एक तरह से सीक्रेट रखी गई है, तो वो चीज़ें भी जो है साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है. स्कॉर्पियो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मैरिड लाइफ, योर इन लॉस एज वेल. Then we have the sign of Capricorn. Capricorn sign represents writing, it represents reputation, it represents your fame, it represents your working place, it also represents singing. Why? Because Saravan Nakshatra occurs in the sign of Capricorn. And honestly, Saravan is not related to singing, not instrument singing. It is related to singing, and whenever I have
I do consultations of people who have Saravan Nakshatra, and sometimes I do ask them, are you interested in singing? Not in music as such, दूसरों को सुनना नहीं, पर खुद गाना गाना अच्छा लगता है. And many good singers have Saravan Nakshatra, although Saravan is not related to singing, but still singers come out of Saravan, Capricorn sign. So moon in Capricorn can definitely make a person a musician, a singer. So that can be seen. And of course, sign of Capricorn also represents your fame, recognition, reputation, your working place, occupation. It represents your authority as well, bosses. And 11th house, or the sign of Aquarius, also represents your bosses, but it represents authorities se gain from authority seen from the Aquarius sign. Aquarius sign also represents wildlife, whereas Virgo sign or 6th house represents domesticated pets. So like dog, cat, these, whereas 11th house or Aquarius represents wildlife, tiger, lion, I mean these elephants, or anything which is any animal which is in the wildlife. So that's there. At the same time, Aquarius sign also represents your elder siblings, so that's there. And if your moon is present in the sign of Virgo, you are a person who can be good in skills of hands, because Hasta occurs in the sign of Virgo. So you can be a person who is very skilled in hands. You can be a person who is good in fixing things at home. You become a handyman as well. You can be a person who is very good in sewing and painting, sculpting. You can be good in these things, as well as you may have healing hands. You heal people through your hands by giving them massage, or Reiki healing can be seen from Hasta. And jo Virgo sign is ke andar we also have Chitra Nakshatra. So you can be a person who is good in accounting as well. You can become a person who is working in bank or working in finance. You can even get MBA in finance or marketing as well, sales, becoming a salesperson, that can also happen. But basically I've seen bankers from Chitra Nakshatra in the Virgo sign. In the Libra sign, then jo Libra sign mein agar aapka moon है, especially in the Chitra, because Chitra जो नक्षत्र है वो spill करता है in the Libra sign, तो वहाँ पर जाके this Chitra will work differently, will behave differently, because Libra is ruled by Venus. If your moon is placed in Libra, then definitely you are a person who will be very much interested into designing. You can be interested into becoming a UX or UI designer, software को design करना, या फिर जो आपकी साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती है, उनको डिज़ाइन करना. वर्चुअल रियलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ योर मून इज प्लेस इन द चित्रा नक्षत्र इन द लीब्रा साइन. सो दैट्स देयर. चित्रा लीब्रा and Chitra Virgo are very different. So then we have the sign of Scorpio. So if your moon is placed in the sign of Scorpio, it can be in Anuradha Nakshatra. Anuradha is a nakshatra about pipelines as well. So if your moon is placed here, moon controls the water. So यहाँ पर आपकी जो घर की पाइपलाइंस होगी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी. एटलीस्ट ट्वाइस, यानी 2 सालों में एक बार जो है आप अपनी घर की पाइपलाइंस ज़रूर चेक कराओ. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट कि अच्छा मेरी टैप वर्क करिए, नो, पाइपलाइंस कैसी है, उसमें कुछ फंसा तो नहीं हुआ है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द पाइपलाइंस ऑफ द अनुराधा पर्सन इज ऑलवेज काइंड ऑफ in a bad shape. Then of course Anuradha is about friendship as well, because Anuradha has the Varuna and Mitra. So you will have good friends in your life, but it can happen कि you give more importance to your friends and less importance to your blood relations. So that can be seen here. Plus you can be a person who is very good in negotiation. You are a person who is interested into occult mysticism, astrology, because Radha was an expert occultist. So you can be a person who is very much interested into astrology and occult. Then if your moon is present in the Capricorn sign, you can be a person who is very good in writing because of Uttara Ashada Nakshatra. If your moon is placed in Uttara Ashada, you will be a person who writes really well. You can be a person who writes very good emails or financial scripts or political writing or any kind of writing. You are good in these things. And if your moon is present in let's say in the Sarava Nakshatra, you definitely are a person who is good in singing. That can happen. Interest in singing can be seen. You can also be a person who may give advice to other people. Even if you do not have the advice, still you give advice to other people. People come to you, they get attracted towards you because they feel that you can give them the right advice.
So that's there. And if your moon is present in the sign of Aquarius, you can have the nakshatra of Dhanishta. Dhanishta, Dhanishta, नाम में ही धन है, right? So Dhanishta जो है is a nakshatra of wealth. So as soon as you get married, wealth is definitely going to come towards you. And Dhanishta makes you a person who is not going to take, you can be a person who is not going to take anyone's BS. And you are a very technical person as well. You have a very technical approach towards life or approach towards your profession, because Dhanishta is ruled by Mars, and Mars is a very technical planet, so that's there. And yeah, you may even have some music instrument in your house. That can be a tabla, that can be a harmonium, that can be a guitar, sitar, anything, but you will have some sort of music instrument in your house because of this Dhanishta nakshatra, because the symbolism of Dhanishta is a music instrument, drum and flute. And the other name of Dhanishta is Sarvishta. I really like the name, or I really like the term Sarvishta. So yeah, that's it. Let's get started. जो pile number 3 है, उनका जो second half of their life वो कैसी रहेगी, और या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. सी, जो मैरिड लाइफ है या फिर आफ्टर द 35 एज, मतलब एक तरह से एज सुन एज यू गेट मैरिड, चाहे आपने 20 ईयर्स में शादी करी या फिर 22 में करी, स्टिल after marriage suddenly that Navamsha is going to get activated. Or if you are not married and you are 35 plus or 35, your Navamsha is activated. Already it's activated. 35 के बाद Navamsha activate होता ही होता है if you are not married. But if you got married early in your life, then also Navamsha is going to get activated in your 20s. It is going to get activated. But if you are not married, then it is going to get activated after 35 only. So that's there. तो यहाँ पर जो है पाइल नंबर 3, उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज या सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ कैसी रहती है, सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ कैसा है. वी हैव द अवेकनिंग कार्ड, वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड, वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स. तो ऐसा हो सकता है कि समहाउ आफ्टर मैरिज या फिर समहाउ यू काइंड ऑफ डेवलप some interest towards masters or specialization in some subject or getting a PhD. After marriage you can think about these things, that you really want to go back to university and follow that passion of yours. You want to really want to have that PhD done. In your second half of your life, even when you are 35, 36, 37, you still want to pursue studies. So you can be running your Jupiter Dhasha when you are 35. After 35 you can start your Jupiter Dhasha, or after marriage, just after marriage you start your Jupiter Dasha, because most of the time in Jupiter Mahadasha or Antardasha, a person really wants to go for higher education. Why? Because Jupiter rules the 9th house Sagittarius sign, which is about higher education, PhD, post-grad education, or masters in something, specialization in something. So you can be a person after marriage or after 35, you go back to university and get your masters or PhD. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. At the same time यहाँ पर star card है. Star card here represents all your wishes, all your desires in life are getting fulfilled here after marriage or after the age of 35. Somehow जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो. जो भी आपने सोचा था अपनी 20s में कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो चीज़ें आप फुलफिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हो. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. वट एवर यू थॉट दैट आई वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू डू दिस, यू डू इट एंड यू गेट द रिजल्ट एज वेल. तो जो भी आप चाहते हो वो आप करोगे और करके दिखाओगे. यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड भी है. यू बिकम अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स पर्सन एज वेल. यू बिकम अ पर्सन, ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में एक्वेरियस राइजिंग हो इन योर नवामशा. नवामशा में जो ascendant है is of Aquarius and it is the rising sign of course. So it can happen you have Satabhishak Nakshatra, because Satabhishak also occurs in the Aquarius sign. So you have a very weird way of looking towards things. You give weird solution to people but they work. Those solutions work. And you can also be a person who follows Valmiki. एंड यू कैन बी अ पर्सन जो हर चीज़ को बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हो, और काफ़ी you can be a person जो अपनी फैमिली में weird one बन जाए after marriage. Everybody can say that oh she was such a jolly child but after marriage she become the weird one now. She is now the weird one. She
is the outcast in the family now. Somehow you can even get married to a person who is not from your caste and your parents may not like that. That can also happen here. But definitely you have a really weird, a really different, I should say, a very unorthodox way of looking towards life. Let me just pull some more cards for you. एक कार्ड आपकी मैरिज के लिए, एक कार्ड आपके करियर के लिए. सो जो पाइल नंबर 3 की मैरिज है और करियर, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ द कार्ड फॉर मैरिज, दिस इज़ द कार्ड फॉर करियर. तो यहाँ पर जो है चैरियट कार्ड यहाँ पर आया हुआ है. तो ऐसा हो सकता है आफ्टर मैरिज यू रियली हैव टू मूव अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स. जो आपका होम टाउन था उससे आपको दूर जाना पड़े. एटलीस्ट 200 to 300 किलोमीटर्स का यहाँ पर जो है डिस्टेंस नज़र आ रहा है. सो दैट्स देयर. एट द सेम टाइम मैरिज समहाउ गिव्स यू पर्सनल ग्रोथ एंड एक तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी मैरिज आपको हेल्प करती है. जब भी आपके अपने स्पाउस से लड़ाई होती है, समहाउ यू बिकम एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, समहाउ यू बिकम अ पर्सन जो भगवान की तरफ जाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है. बिकॉज इफ़ यू आर रियली हैप्पी in this world, in the society, you are not going to look forward to God. You are not going to really look towards and follow the principles of God, because आप दुनिया में पहले इतने खुश हो तो आप क्यों इस रास्ते पे चलोगे. जो दुखी होता है वो सबसे पहले भगवान को याद करता है. कहते हैं ना कि सुख करता दुख हरता. तो पहले दुख आएंगे तभी आप भगवान के पास जाओगे, फिर आपको सुख होगा और वो दुख हरे जाएंगे. राइट. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब भी आपकी लड़ाई होती है, कुछ भी लाइफ में जो है ख़राब होता है, यू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन. दैट इज़ ऑल्सो सीन हेयर. 3 of Swords here is representing your profession. तो ऐसा हो सकता है. इट्स अ वेरी ड्रामेटिक पिक्चर बाय द वे. ऐसा कुछ नहीं है, बट इट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि ऐसा हो सकता है द थिंग विच यू रियली वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. समहाउ वो जो पोजिशन है या वो जो करियर है वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव द डिग्री, व्हेन यू हैव दैट इंफॉर्मेशन और यू कैन से वो नॉलेज होगी, तभी आप वो बिजनेस परस्यू कर सकते हो या वो जॉब ले सकते हो. तो समहाउ यू आर रियली हार्ट ब्रोकन कि यू नो व्हाट, इन माई 20s या इन माई अर्ली 20s आई शुड हैव डन माई PhD और मास्टर्स, पर मैंने करी नहीं, या मैंने इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं करा, मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं. बट नाउ आई रियली वांट टू डू इट, नाउ आई हैव टू गो बैक टू यूनिवर्सिटी. तो ये चीज़ है यहाँ पर. समहाउ यू इवन चेंज योर जॉब क्वाइट अ लॉट आफ्टर मैरिज. थोड़ी यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है. फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल हो, बट कहीं ना कहीं यू वांट मोर, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू रियली बिकम समथिंग, एंड टू बिकम दैट समथिंग यू रियली नीड दैट नॉलेज. सो यू गो बैक टू द यूनिवर्सिटीज़, यू गो बैक टू योर बुक्स. सो दैट इज सीन हियर. बट डेफिनेटली आप अपनी जॉब कई बार चेंज करते हो. यू डोंट गेट सेटिस्फाइड ईजिली विद योर जॉब, विद योर पोजिशन. यू वॉन्ट मोर सक्सेस. तो ये चीज़ यहाँ पर है. लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू फ्यूचर के लिए गाइडेंस कार्ड. ऑल राइट, वी हैव द हीलर ऑफ एजेस. यहाँ पर अगेन कहीं ना कहीं आई रियली फील दैट योर राइजिंग साइन और योर a potent sign in your Navamsha is Aquarius. Somehow इस साइन में, एक्वेरियस साइन में काफ़ी प्लैनेट्स हो सकता है, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स हो सकता है, या फिर राइजिंग ही एक्वेरियस है. समहाउ यू हील पीपल बिकॉज सप्तभिषक इज़ अबाउट हीलिंग. इट्स अबाउट 1000 हीलर्स एंड 1000 स्टार्स. सो यहाँ पर आप मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हो, इसके भी चांसेस है. एंड समहाउ यू आर ऑल्सो अ पर्सन हु लव स्टार गेजिंग, और तारे देखना जिसको बहुत पसंद है, और स्काई के बारे में फैसिनेशन होना, ये चीज़ें हैं. बट येस, यहाँ पर हीलर कार्ड आया हुआ है. सो डेफिनेटली यू आर गोना हील अदर पीपल in your profession. Somehow you heal other people, heal your acquaintances, even if you are not a person जिसकी job healing की है, but still through your communication you heal other people. And when you heal other people, जब आप किसी को अच्छा दे रहे हो, जब आप किसी को good vibration दे रहे हो, अच्छी भावना, शुभ कामना दे रहे हो, तो आपकी तरफ भी जो है शुभ कामना, शुभ भावना आ रही है. तो हमेशा दुआ अपलिफ्ट करती है. तो आप उनकी वजह से अपलिफ्ट हो रहे हो इन फ्यूचर, एज वेल एज आप उनको भी अपलिफ्ट कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से यू नो आई read a comment in my previous readings, in my previous tarot reading on YouTube, that somebody wrote कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी जा रहे हैं पर इन रिटर्न हमें कुछ नहीं मिल रहा है. ऐसा नहीं है. इन रिटर्न आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, हमेशा. और वो दुआ होती है जो आपको काफ़ी ऊपर लेकर जाती है अपनी लाइफ में, काफ़ी आगे लेकर जाती है अपनी लाइफ में. बद्दुआ हमेशा डाउन डाउन लेकर जाएगी, और जो एक दुआ होगी वो आपका खुशी का पारा भी ऊपर चढ़ाएगी, और साथ ही साथ दुआ आपको ऐसे मुकाम तक पहुंचाएगी या ऐसी मंजिल तक पहुंचाएगी जो लोग मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाते.
आज की डेट में, आज की डेट भी छोड़ो, हमेशा से अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इवन इफ इट वॉज 1990s, ये एडवाइस सेम रहेगी। अगर हम 1990 में ये वीडियो देख रहे होते, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज द 90s वर काइंड ऑफ द ओल्ड एज, और आई शुड से स्टोन एज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो तो अगर हर युग में या हर टाइम पीरियड में जो है ये बात सच है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता सक्सेस के लिए, स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। और साथ ही साथ हर किसी के लिए शुभकामना और अच्छी भावना रखनी ज़रूरी है। दुआ हमेशा आगे लेकर जाएगी। आगे बढ़ना है, टॉप पर पहुंचना है, CEO लेवल पर पहुंचना है। किस इंटेंशन से आप काम करो ये मैटर करेगा। किस इंटेंशन से, लोगों को लूटने की इंटेंशन से या फिर उनका भला करने की इंटेंशन से। बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ कार्मा एंड सैटर्न ऑल्सो गिव्स फ्रूट ऑफ योर कार्मा। सो इफ योर कार्मास आर वेरी मच रिलेटेड टू योर धार्मा, डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रूट, बिकॉज धार्मा हमेशा पॉजिटिव होता है। इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर पीपल, you are gonna get blessed by Saturn. You are gonna get the success, because Saturn rules the 11th house of wealth, gains, reputation as well, and favors from the authorities. So do your good karmas with good intention. ये intention से मत करो कोई भी काम, या ये intention से दूसरों की help मत करो कि ये person मेरे लिए कुछ करेगा। नो, नहीं, हमेशा गिवर रहो, देते रहो, लेने की तो सोचो भी मत। That's the rule. Alright dear, so this was the reading for you. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.